पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, जहां पहाड़ है, हरियाली है और सुकून है। इस इलाके की एक अलग तहजीब भी है। साल 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बना और अब ये देश ही नहीं, दुनिया का पहला ऑर्गेनिक राज्य बनकर दुनिया को राह दिखा रहा है। लेप्चा जनजाति सिक्किम की मूल जातियों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में गिरावट आई है। लेप्चा जनजाति, उसकी बोली और रीति रिवाज दम तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक पूर्व नौकरशाह जो स्वयं भी इस जनजाति से हैं, इनके संरक्षण के लिए आगे आई। वो हैं कीपू, जो यहाँ गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लेप्चा कॉटेज की प्रतिबद्धता के जरिए अहम रोल निभा रहे हैं। इसकी शुरुआत सिक्किम में गैंगटॉक से कुछ किलोमीटर दूर चैनमरी में कीपू शेयरिंग लेप्चा के 6 कमरों वाले घर में 20 बच्चों के साथ हुई थी। Now whatever you see now, they had come to Lepcha cottage and we had 20 children then. बाद के वर्षों में संख्या बढ़ती गई। अब कॉटेज में लेप्चा जनजाति के 55 बच्चे रहते हैं। It was completely my sister, late sister was there. After her retirement, she was assistant nursing superintendent of North Sikkim. After her retirement, she was at Lepcha cottage. So we two sisters were fully involved. Because of her background, I had no problem in going on tour or attending to my work in the office. And then 7 years, two of us, from our house pension and my salary, we had 20 children living with me. And after 7 years, some NGOs from Switzerland, they came and they assured us that they will be supporting us. So now what you can see is because of the NGO in Switzerland. And it is also, you can see crores of rupees they have invested. School, hostel, we have 3 hostels. Boys hostel is a little away from here. We have got about 80 boys living there. And in this hostel for the little senior ones, we have more than 100 children. And one more, it's worth seeing. This the latest hostel. It's for the little girls, little children, mainly for the girls, but 1 or 2 exceptional cases are there. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कीपू ने लेप्चा कॉटेज और आस पड़ोस के बच्चों को शिक्षित करने में मदद के लिए एक स्विस कंपनी की मदद से एक स्कूल सह छात्रावास का भी निर्माण किया। आज इस स्कूल में बड़ी संख्या में जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल आज सभी सुविधाओं से संपन्न है। कीपू इन बच्चों के लिए निकुंग यानी दादी हैं। पूर्व नौकरशाह कीपू शुरुआत में अपना पूरा वेतन बच्चों पर खर्च कर देती थी। अब अपनी पेंशन का भी पूरा हिस्सा इन बच्चों पर खर्च करती हैं। कीपू राज्य या निजी स्रोतों से सहायता लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था की सहायता नहीं चाहते। हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत कीमती है। Here also maximum children are Lepcha. I started with Lepcha children, but now the things are a little different. We don't limit ourselves to Lepcha children only. We do have certain percentage of very, very genuine cases. In genuine cases, we take children from other communities also. The majority is, Lepcha. They come from remote areas. So in the classes also you must have noticed that we have sections and not more than 25 children in one section. Sometimes it is 20 to 25 children. So that we can attend to the children coming from remote areas. From Sikkim only. So far we have been attending to children from Sikkim only, except 1 or 2 children. Very exceptional cases. Why I started was because I was still in job. That means 11 years
before I got retirement. That's what I could do, the same language, tradition, culture. So children get adjusted very easily. We use the same language, food habit, culture, everything. So I started with, by the end of the year in 1989, there were 20 Lepcha children staying in Lepcha cottage. And then in 95, the NGOs, they came as tourists, they came to Sikkim. And one gentleman, he brought them to Lepcha cottage. It was Mr. Max Mediger, I must not forget him. He's from Switzerland. During his second visit to Sikkim, one gentleman, he brought him to Lepcha cottage. He had some other friends also, and they got very much impressed, and then they gave assurance they'll be supporting the children. But then they did more than that. They immediately went back and then got a lot of, there's another lady who is no more now, so they got lots of sponsors for construction of the school. We started with the girls hostel over there, and we started with that. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कीपू ने सिक्किम का मानव विकास फाउंडेशन 1997 में शुरू किया था। आज इसमें 370 डे स्कॉलर्स और 125 बोर्डिंग छात्र हैं, जो ज्यादातर गरीब परिवार से हैं। इन छात्रावासों में सभी सुविधाएं हैं, शिक्षा और आवास निःशुल्क है और आपस का निश्चल प्रेम बोनस में है। बच्चों को खुश रहने के लिए भला और क्या चाहिए। Number one, very less, and then there are some very obvious reasons. And now for things are changing, but then number one, I always talk about one of the missions you can call, besides education, is how to stop alcohol, consumption of alcohol. That's very common, very common. Now things are changing. A good many of them have stopped using. Otherwise, even the ladies, for them it is quite natural. And not in the town area, cities, not in the urban areas, but in the remote areas, it is still, So that's one thing. Then, of course, education-wise also. But since the last government, I think a lot of schools are there, and I'm also so surprised that now we have got so many postgraduate students or those who have done post-graduation, a lot of ladies and gents there, because number of colleges are there. कीपू के सामने तमाम चुनौतियां थी, लेकिन उन्होंने समुदाय की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आज उम्र के इस पड़ाव में भी वो समुदाय की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज मात्र 30 से 40 हजार लोग इस जनजाति के हैं। उम्मीद है कि इनकी कोशिशों से ये जनजाति एक बार फिर अपने सुनहरे अतीत की तरह उज्जवल भविष्य को गढ़ पाएगी। कीपू लेप्चा, जिन्होंने लेप्चा जनजाति के अस्तित्व के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें इस काम के लिए साल 2009 में पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनका सफ़र वहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला आज भी जारी है। सिद्धार्थ झा, सिक्किम से, संसद टीवी के लिए।